है, if the case study based questions are going to increase in MCQs, what I feel is that you guys should focus on the 70 marks theory part writing first. तो वो जो क्वेश्चन है पहले उसको खत्म कर देना चाहिए, and after that you should shift yourself to that 30 marks of MCQs. And in your first 15 minutes reading time, no, don't start reading the MCQs, because what happens is students will read the MCQs, and after reading the MCQs, now they suppose the time is very less to read the other 70 marks of questions, then you are not able to plan your paper. First question मुझे क्या attempt करना है. And also when you are reading the MCQs, you are reading it from a very what do you call overview perspective, and not कि मेरे को अभी इसका आंसर अब करना है, because it is your 15 minutes reading time. So but obviously you have to read the MCQs later on also. तो बाद में जब आप MCQ क्वेश्चन करने के लिए आओगे तभी आपको वापस MCQ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग 15 मिनट्स में फर्स्ट फोकस ऑन द 70 मार्क्स का थियरी, रीड दैट प्रॉपर्ली, सेट योर क्वेश्चंस कि पहला क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, थर्ड कौन सा करना है, फोर्थ कौन सा करना है, एंड कीप द एमसीक्यूज पार्ट फॉर लेटर बिकॉज उसको रीड करने के लिए आफ्टर ऑल द क्वेश्चंस आर डन यू विल गेट प्रॉपर टाइम टू गो थ्रू दैट एमसीक्यूज पार्ट. फॉर एमसीक्यूज आई फील यू शुड प्लान एंड कीप 1 hour 10 minutes एमसीक्यूज के लिए रखना चाहिए साइड में एंड में. So your 70 marks should get over, in my opinion, in 1 hour 50 minutes, and 1 hour 10 minutes you should keep it for MCQs at the end. That is what my advice will be. In this case, different people can have different perspective, but मैं जो students से deal करता हूँ and what issues they tell me, from that I'm telling you that for proper strategy, go for that theory part first, complete in 1 hour 50 minutes, and then target MCQs in 1 hour 10 minutes. ये मेरा suggestion रहेगा. Sir, both for law and audit, yeah, both for law and audit. बिकॉज अगर एमसीक्यूज अगर पूछ रहे हैं तो एमसीक्यूज में रीडिंग टाइम तो काफी जाएगा आपका. सो यस, फॉर बोथ लॉ एंड ऑडिट माय एडवाइस विल बी द सेम. पहले वो जो 70 मार्क्स का पार्ट है उसको रीड कर लो, एंड कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सा क्वेश्चन सेकंड, कौन सा क्वेश्चन थर्ड, उसका पूरा ऑर्डर सेट कर देना है यहाँ पे, एंड देन गो हेड विद द फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट इन दोस क्वेश्चंस. ठीक है, उस तरीके से जाना, बिकॉज यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर बेस्ट फेस टू द एग्जामिनर एट द बिगिनिंग. ये करना बहुत जरूरी है. ऑल द क्वेश्चन विल बी वेरी गुड ओनली, डोंट वरी, तुम लोग का प्रिपरेशन अच्छा ही है. All the questions will go very good only, but still there should be a priority order so that in your brain you're clear मुझे किस तरीके से इसको लिखना है. That is why. Sir, anything different to do in 3.5 days now? So before your prelims, correct? So Arnav, my suggestion to you will be, and if I would have been in your place as a student, so मैं क्या करता यहाँ पे? I would have done the chapter with the perspective that मेरे को एग्जाम लेवल का प्रिपरेशन कैसे करना है, पहले मैं उस एंगल से पढ़ता. आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से यू आर स्टडीइंग डिफरेंट एंटिटीज नाउ. ठीक है, तो डिफरेंट एंटिटीज पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद ना यू हैव टू मार्क की कौन से एरियाज में ध्यान देना. जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ऑडिट ऑफ एलएलपी अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो ऑडिट ऑफ एलएलपी को मार्क करके रखो कि अच्छा ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा है. तो व्हेन यू राइट देयर डू ऑल चैप्टर्स फ्रॉम कार्तिक सर्स टेक्स्ट बुक, एंड आफ्टर दैट बिलो जस्ट राइट देयर डू ऑडिट ऑफ एलएलपी प्रॉपर्ली. सो यू आर गिविंग योरसेल्फ एन इंडिकेटर की ये एरिया में मुझे रिवीजन में तकलीफ हो रही थी, इसको मुझे और थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा. So whatever are the problem factors that you are able to identify, no, that you should write it there. ठीक है, एक तो वो. दूसरा, suppose if you go through RTP mock test papers now, then you should mark it वहां पे अभी मार्क कर देना है. मतलब ये जो 3.5 है इसमें मार्क करना है प्रीलिम्स के पहले की so and so RTP, let's say RTP of November 2021 में ये particular question आया था इस chapter से, which is there in the new portion also, and this question I was not able to answer when I went through the RTP. So note it there, note November या May 2021 जो भी RTP है, पेज नंबर so and so of the RTP you have to go through. So you know कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे go through करना है. This you have to do for every chapter. तो इसको मैं बोलता हूँ कि having every chapter in your control means what? चैप्टर नंबर 1 उसमें मुझे क्या पढ़ना है, तो यू हैव रिटन देयर कार्तिक सर्स नोट्स या कार्तिक सर्स टेक्स्ट बुक. ठीक है, अच्छा उसके नीचे क्या लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया यहाँ पे कि आरटीपी सो एंड सो का ये क्वेश्चन देखना है, ये मॉक टेस्ट पेपर सो एंड सो का ये क्वेश्चन देखना है, पीवाईपी पास्ट ईयर्स पेपर्स का ये क्वेश्चन देखना है. सो व्हेन यू हैव दैट इन प्लेस, सो यू हैव कीपिंग टेलिंग योर माइंड कि देखो चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड मैंने अगर इतना कर दिया देन चैप्टर नंबर 1 इज वेरी वेरी स्ट्रांग. सिमिलरली दैट द सेम थिंग फॉर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये अभी रेडी करना है व्हेन यू आर रिवाइजिंग. जब रिवीजन चल रहा है तब ये रेडी करना है ताकि आपका एग्जाम के दिन का जो तैयारी है वो बहुत एकदम स्मूथ तरीके से जाए, अच्छे तरीके से जाए. आर नाउ वेरी वेरी क्लियर, प्लीज टेल मी यस और नो. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है 3.5 days वाला. टेल मी एनी अदर डाउट.
Students, any other query that you are having? Preparation related? Preparation related, any other query, please ask me. Sir, how to take out time for studies in the middle of distractions? यार ये distraction वाला जो point है ना, I'll tell you very honestly, distraction is equal to lack of hunger. सीए बनने का भूख अगर कम रहेगा ना यहाँ पे, तो डिस्ट्रैक्शन आराम से आपको कैच करेगा. लेकिन अगर सीए पढ़ने का अगर करने का अगर एकदम जोश अच्छा है, देन आई थिंक यू शुड बी एबल टू कम अक्रॉस और कम ओवर दैट डिस्ट्रैक्शन. दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है. तो व्हाट आई फील इज कि मोबाइल खुद से आप साइड पे रख दोगे अगर सीए बनना है तो अच्छे से, तो यू कीप द मोबाइल पहले से साइड में. आपका जो डिसिप्लिन का तरीका है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, बिकॉज यू नो दैट वरना क्लियर तो करना ही है कैसे भी करके. सो यू नो दैट मेरे को ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर डिस्ट्रैक्शन इज अफेक्टिंग योर स्टडीज टू मच. कुछ स्टूडेंट्स क्या उनका मोबाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उन लोग को पता है कि पढ़ते समय मोबाइल में को ऑफ रखना है, या अगर मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे तभी मोबाइल यूज करना है अच्छे से, नहीं उसके बाद मुझे मोबाइल टच नहीं करना है. दैट कंट्रोल दे आर हैविंग. सम स्टूडेंट डोंट हैव दैट एंड दे सडनली गो टू इंस्टाग्राम में फिर रील देखना चालू करते हैं, फिर यहाँ पे टाइम पास करना चालू करते हैं. व्हेन दैट हैपेंस नो, देन दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. जब अपन ये करते बैठते हैं ना, ये रील देखने का, देन यू आर इन अ साइकिल वेयर 2 घंटे के बाद समझ में आएगा अरे यार मैंने तो 2 घंटे से मैं रील ही देख रहा हूँ यहाँ पे. दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. अर्नव ने लिखा है सर 3.5 days बिफोर द मेन एग्जाम ऑल्सो क्या करना है, तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड आई विल पुट ऑन इंस्टाग्राम, डोंट वरी. आई एम गोइंग टू गिव अ स्ट्रेटजी फॉर दोस 3.5 days की व्हाट यू नीड टू डू. चैप्टर वाइज आई विल टेल यू कि पहले ये चैप्टर खत्म कर दो, इसमें ये चैप्टर खत्म कर दो, इसका ये एक दिन पे ये टेस्ट लिखना है, ये मैं पूरा बता दूंगा यहाँ पे. बिकॉज 3.5 days है तो यू कैन हैव अ टेस्ट प्रैक्टिस ऑल्सो इन द मिडल. आपने एक पेपर भी लिख सकते हो ऑडिटिंग का यहाँ पे. सो बिकॉज 3.5 days इज अ लॉट ऑफ गैप फॉर ऑडिटिंग पेपर स्पेशली. ठीक है. सो आई विल बी गिविंग अ वीडियो ऑन दैट, डोंट वरी. ठीक है. वो आ जाएगा. जैसे तुम लोग के ऑडिट के एग्जाम, जैसे जैसे आप प्रीवियस एग्जाम लेके घर लिख के घर पे आओगे, एंड व्हेन यू गो ऑन इंस्टाग्राम, सपोज यू गो फॉर 5 minutes आल्सो, यू विल सी माय वीडियो देयर कि कार्तिक सर ने वीडियो डाल दिया है यहाँ पे. ओके. सो माय 3.5 days बिफोर द मेन एग्जाम का वीडियो आ जाएगा. ओके. हर्ष हैज रिटन लास्ट मंथ में पास्ट अटेम्प्ट्स पेपर या फिर से पोर्शन करे बोथ लॉ एंड ऑडिट. अभी तक अगर कोई पेपर्स देखे नहीं हो, या आरटीपी अगर देखे नहीं हो, या मॉक टेस्ट पेपर देखे नहीं हो, then I feel that every student should go through last 6 RTPs. They should write at least 3 tests per subject. ये मेरा मिनिमम है लिखने के लिए, which I always tell to score excellent marks. ठीक है ना. ये मैं 70 प्लस की तैयारी की बात कर रहा हूँ. एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर जितना देखोगे उतना बेटर है, बिकॉज जितना प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आता है. ये आपको करके रेडी रखना है. लेकिन एग्जाम के दिन, मतलब जिस दिन आप वो, जैसे अभी कुछ दिन के बाद ऑडिटर का पेपर है यहाँ पे, जैसे 3.5 days दिस टाइम यू आर गेटिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन लीव दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ फॉर दिस अटेम्प्ट. सो फॉर दिस टाइम यू हैव टू एंश्योर कि जो ऑडिट का तैयारी है यहाँ पे वो किस तरीके से करना है, उस जो 3.5 days में उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने. So you should not do a new RTP or a new past year's question on that and on those 3.5 days. No, you should not do. You should only repeat what you have already done in the past. But in the last one month also, if you have not gone through the RTPs or mock test papers, you should go through it. Mark out the questions that you found tough और उसको mark करके रखना अच्छे से. और वही जो मैं बोल रहा हूँ, कंट्रोल रखो हर चैप्टर का, वो तुम लोग को मेंटेन करना है यहाँ पे. That is what my suggestion would be. बोलो और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे. Sir, audit and auditors chapter is there in law and audit both the subjects, right? So for May 24, no, Archita, it is only there in law. It is not there in audit. So remember that. For May 24 attempt, it is that entire area is now shifted to the law syllabus. It is not there in audit. But audit faculty teaches it. तो वो confuse होता है student के mind में. तो इसके लिए remember, audit and auditors, that is section number 139 to 148, is there in the law syllabus and not in auditing portion. And in any case, see, you will be writing the law portion first, right? Law portion तो पहले पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है ना? The students who are giving both the groups will be studying law portion first. तो वो ऑटोमेटिकली वो तुम लोग को याद रहेगा यहाँ पे. तो आपको उसका सेपरेट रिवीजन करने की जरूरत नहीं है ऑडिट पेपर के लिए. सो लॉ में आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो अगर ऑडिटर का टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम, ऑल दिस थिंग्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर बिकॉज़ लॉ का तैयारी अभी जस्ट लेट्स से 3-4 days बैक ओनली यू हैव डन फॉर द लॉ पेपर इटसेल्फ. करेक्ट. एवरीवन वेरी क्लियर? प्लीज टेल मी. और कुछ क्वेरीज, एनी अदर मैटर दैट आई कैन हेल्प यू विद? ओके, चलो ग्रेट. सिंपल. नाउ